सो हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर को यूज करके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया था, जिसके अंदर यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इसको डिजाइन किया था। इट्स नॉट अ बिग डील कि हाँ हम इसको किस तरह से डिजाइन करता है, बट इट्स ओके हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क्स एंड हाउ वी कैन अचीव ओवरऑल, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्टर यूज करना ना करना क्या होता है, क्या नहीं, कब इन पार्ट्स को यूज किया जाए, कब नहीं, ये सब कुछ मैटर करता है। पहले ये सब कुछ नहीं था, वो बात अलग है, बट अब ये सब कुछ मैटर करता है। सो कुछ चीजें हैं जो कि प्रैक्टिस में होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट ओपनिंग मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप प्रैक्टिस पर फोकस करो जावा के अंदर, एंड देन when you create a proper web application or android application, at that time you make sure you have uh, know about all the concepts. Then you can use a constructor or not. It's your decision, not Java. Java will provide you, I will provide you as a concept, but how to use it's your choice for your projects. So ये मैटर करेगा, तो आप किस तरह से यूज करते हो वो डिपेंड करता है। बाकी यहाँ तो सब कुछ सेम है। तो देखते हैं किस तरह से हम ये इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस एक ही देखा है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चला जाता हूँ और देखते हैं। सो चैलेंजिंग क्वेश्चन पर ही फोकस करूंगा, बेसिक क्वेश्चन को क्या इतना ये करना है। राइट, हाँ, write a class employee with ID, name, and salary, and initialize the value, add a method bonus that returns 10% of salary. Wow. And then create two employee object and print their bonus. Okay, and print their bonus. So let's create, and now I just copy the question. After that, create a new oops concept inside. There is a problem statement package is there, so right click on this package, new, and then class. After class name has a problem underscore 02, it's my class name. Oh, p, it's a small, so मैं इसको capital कर देता हूँ, and then I just want to change, rename file problem2. Okay, done. After that I want main method. So here is the main method. So now paste the question and then copy and select here. Okay, now selected, create a class employee ID, name, and okay. After that, I just want to print overall data. So here I just create one class as a employee, as a employee. Okay, in that I just want use ID, name, and salary. For ID I just want use a integer data type, so int ID, and then for name I just use string name, and for salary I just want to use as a double salary. Make sure whatever the property given in a question they are mentioned in your problem statement or you are in flow. Okay, write a constructor to initialize the value. Wow, write a constructor. So we know about the constructor. Constructor is a same name as a class name, so just copy and paste here. After that you can give the parenthesis and then curly braces. Here write a constructor to initialize values. Values को initialize करने के लिए constructor लिखना है. So in this initialize बोला गया, यानी ये constructor, and then add a method bonus that returns 10% of salary, यानी वो bonus 10% return करेगा, and create two employee objects and print their bonus.
हम्म, और उनके बोनस को हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। बेसिकली ये सब कुछ चीजें होती है जिनको हमें फोकस करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप इन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हो एंड देन एग्जीक्यूट कर रहे हो। हाँ, तो अब यहाँ पर 10% सैलरी यानी क्या होता है? 0.10, जो भी एक्चुअल सैलरी रहेगी उससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर उस तरह से दिखा सकते हो। सो बोनस मेथड के अंदर ऐड मेथड बोनस दैट रिटर्न्स 10% ऑफ सैलरी and write a constructor initialize the values, and then you can print the overall even dot bonus and e2 dot bonus, and whatever here is the salary it will returns with same amount। हाँ, सो अब यहाँ पर चलो सेम पार्ट कर लेते हैं किस तरह से किया जाए। सो एम्प्लॉय के अंदर आईडी मुझे देना है। सो मेक श्योर you can use here as a int ID, but here ID I just want to use as a emp underscore ID, and then string string emp employee name, and then string, sorry, then double, so double here is double for salary, so emp underscore salary. Okay, after that assign for a class instance, so id equals to emp underscore id, and then emp sorry, then name equals to emp underscore name, and then salary equals to emp underscore salary। ओके, डन हो गया। अब ये हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक बोनस मेथड लिखना है। सो मेक श्योर एज इट इज स्पेलिंग होनी चाहिए जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। सो बोनस विल रिटर्न, अब ये बोनस जो है ये एक नॉर्मल क्लास है, नो सॉरी नॉर्मल मेथड है। सो इसका रिटर्न टाइप रहेगा हमारा डबल। क्यों डबल रहेगा? क्योंकि ये सैलरी के साथ ये डेटा को रिटर्न करना चाहेगा। सो रिटर्न सैलरी into 0.10 यानी 10% ऑफ सैलरी। सो बस इतना ही पार्ट करना है। एंड देन अब ये यहाँ पर हो जाने के बाद मैं जस्ट बेसिकली यहाँ पर उसको प्रॉपर वे में यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट टू एम्प्लॉयज, फॉर दैट एम्प्लॉयज, हाँ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय of employee 1 equals to new employee. In that, I enter ID. After that, I just give the Naruto employee and his salary, which is 40,000. Okay, which is salary is of 40,000. And then I just want to create another employee 2, new employee. Okay, here is the 123, no, 124, and here is the uh, employee is a Sasuke, and his price or his salary is 42,000 मान लेता है। Okay, and then I just want to print sys out print their bonus। So बोनस नहीं, प्रिंट देयर बोनस, बोनस कितना मिलेगा? ओ, सैलरी इनटू 1000, हाँ बराबर है, उतना बोनस मिलेगा। सो बोनस बोनस इसको बोनस चाहिए। सो बोनस फॉर first employee, bonus for Naruto. So for that, I just want to print employee dot name, uh,
plus operator is colon and then plus employee one dot bonus. Bonus will return the double amount. So here employee 2 and then here also employee 2. ओके, समझ में आना आ रहा नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, बट इतना डिफिकल्ट नहीं समझने के लिए. सो देखो मैंने यहाँ बोनस फॉर एम्प्लॉय, बोनस फॉर नरूटो एंड बोनस फॉर सासुके इस तरह से लिख कर आएगा, इज बोलकर लिख कर आएगा एंड देन आउटपुट हो गया. सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन. So here the bonus for Naruto is of 4,000 rupees and bonus for Sasuke is of 4,200. यहाँ पर इस तरह से लिख कर आया है. सो ये यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, वो किस तरह से यहाँ पर आपके सामने है. सो मेक श्योर आप भी इसी तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, आप देखोगे तो वो समझ में आ जाता है. सो मेक श्योर इन क्वेश्चन को सॉल्व करो. अगर आपको नहीं दिखता है तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो एंड देन ट्राई करने की कोशिश करो. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो. सो टाटा बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना.